example of what you can do to really gather a collective, I would say, approach towards what is fundamentally the government's responsibility, but today has become, I would say, has involved students and every section of our society as stakeholders in this exercise. And certainly we look forward to much more of the University Connect as we go along. I just want to, I think, cut short what would be a rather long speech to thank all of our delegates who have come from different parts of the world, from the G-20 countries, but from across the world, to be with us today. As I said, your views are very important to us in the way we handle our presidency, and we look forward to your collective suggestions and responses in how we can make our presidency an ambitious, inclusive and result-oriented effort. Thank you so very much. Jai Hind. Namaskar. Thank you, sir, for reiterating the importance of values, ethics, sustainable and inclusive growth in today's world and its percolation at the grassroots level. Now it's my privilege to invite Dr. Slemet Suyodarshno, Deputy Minister of Political Affairs, Law, Security and Defense, Ministry of National Development Planning, Indonesia. Honorable Chief Minister, Excellency Mr. Pratik Hajela, Chief Executive Officer, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, respected Professor Sachin Chaturvedi, Director General Research and Information System for Developing Countries, and Vice Chairman Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, and Madhya Pradesh Rajya National Institution for Transforming India, Niti Aayog, respected Mr. Sri Rohan Jetley, Member, Think 20 India Core Group, New Delhi, respected Ambassador Sujan R. Chinoy, T20 Chair and Director General, Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis, New Delhi, Excellency Mr. Tetsushi Sonobe, Dean and CEO, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan, Excellency Mr. Sri Harsh Vardhan Sringla, G20 Chief Coordinator, Government of India, Excellency Mr. Sri Suman Berry, Vice Chairperson, National Institution for Transforming India, Aayog, Government of India, Excellencies, Honorable Speakers and Panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning. It is our pleasure to speak at this opportunity as a part of the Troika and G20 presidency. First of all, I'd like to congratulate the Government of India for leadership on the Voice of the Global South Summit, as well as Presidency India in the G20. We believe with Government of India leadership, it could further create a more inclusive and balanced international development agenda that benefits for the global South. Last year, under the Indonesian G20 presidency in 2022, the G20 Development Working Group has identified several global crises and challenges that hinder the progress to achieve the SDGs agenda. The identified crises and challenges include climate change, food insecurity and lack of access
to adequate and affordable finance and technology. In dealing with getting access to the COVID vaccine, for example, Indonesia also continues to fight for equal access to vaccines for all countries. You may be aware that there was a wide gap of development between the developed and developing countries. Up to almost 70% of the world population has received at least one dose of a COVID-19 vaccine. However, only 25% of people in low-income countries have received at least one dose. Indonesia's hard work so that all countries get equal access to vaccines continues to be carried out in all international forums, among other through the COVAX IMC engagement group, where we are a co-chair. At the regional level, as chair of the ASEAN Health Cooperation Sector Body for 2020 and 21, Indonesia leads and encourages various ASEAN initiatives in overcoming the pandemic and strengthening the regional health resilience mechanism. At the global level, the global health architecture must be strengthened. Indonesia assesses the importance of a new pandemic treaty so that the world is better prepared to face a pandemic. Upon these challenges, the G-20 development ministers agreed to renew the commitment to reinvigorate multilateralism. Among the concrete output is the G-20 roadmap for stronger recovery and resilience in developing countries. Within this roadmap, South-South Triangle cooperation has been set as one of the modalities to support the implementation of collective actions which focuses on micro, small, medium-sized enterprises, adaptive social protections, as well as low carbon and climate resilient development. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we believe that development cooperation should go beyond aid and play a catalytic role in leveraging partnerships, including through South-South Triangle cooperation. SSTC remains a strategic modality to tackling interlinked global challenges. SSTC could ensure knowledge, experiences, innovation, and proven sustainable financing approaches are scaled up across countries. At the same time, SSTC could be one of the drivers of economic development and reducing the geopolitical tensions through solidarity. Recognizing the importance of such development cooperation, in the next 20 years, Indonesia will continue to put SSTC as one of the national priorities to support economic cooperation, transformation, and development. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I believe that Indonesia and India are on the same page toward accelerating the global recovery, including of the global south. We do hope initiatives brought by India to the table could strengthen the preceding outcomes of the G-20 and other global efforts toward a more resilient world.
as one of the co-chairs at the Global Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC, for 2023 until 2025. We would like to encourage India to also participate in this forum to widen the outreach and maximize all means of cooperation for a more effective development. I think I have to stop here. Looking forward to a fruitful discussion. Thank you very much. Thank you, sir. It's an honor to invite the next speaker, Shri Suman Berry, Vice Chairman, Niti Aayog, Government of India, for his special remark. माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, distinguished members of the T20 India core group, particularly our host Sachin, others in the audience. I had a time yesterday at the inception meeting, and I'm very conscious of the fact that the Honorable Chief Minister is due at an important meeting in Delhi, so I will just restrict my comments to a couple of themes. One is the importance of subnational entities for the T20, and the second is, as it were, the mission, the life mission, which is the theme really of this side event of the T20. I think it's important that we recognize that many of the members of the G20 are federations, or India, we call ourselves a union of states. And I do want to use this opportunity to reinforce a point that the chairman of Niti Aayog, Prime Minister, our Honorable Prime Minister Modi makes, which is that India grows when its states grow. And I think that recognizing that a growth process is local is really very important and central for those of us who don't come from unitary governments. And so it is very much a part of Prime Minister Modi's guidance and insight that it was important that G20 events happen around the world, around India, and I do hope that you will use the opportunity of being outside Delhi to get a sense of the reality of economic development in this state and in other states. I think this is important from another point of view, which I think was exemplified by the little tree planting that some of us were part of this morning. And this brings me immediately to the issue of life and lifestyle for the environment, which is to say that what we are talking about is a change in mindset, a change in perspectives on the development process. And as economists, we tend to very much think of policy instruments and technology. But over breakfast this morning with the Honorable Chief Minister, he indicated the importance of persuasion, messaging, and the tree planting that some of us were part of
was an indicator of that. So, I do think we need to remind ourselves at this rather fraught moment in both global politics and the global environment, that where we are right now is as an outcome of a number of decisions and choices that the world has made largely since the 1970s, and that these can be reversed, but that reversing them is an act of political leadership as much as it is of technical leadership, as Prime Minister Modi indicates, pro-planet people. My final point, and then I'll step aside for the Honourable Chief Minister that all of you are waiting for, is that for me what is important about both the G20 and the Sustainable Development Goals is that actually they are what I might call ecumenical, which is to say that neither actually divides the world into developed and developing, north or south. The G20 is a group of sovereigns that have come together to solve their own problems while recognizing their interdependence. And equally, the Sustainable Development Goals, which my institution, the Niti Aayog, is responsible for in the case of India, do not draw a distinction between rich and poor countries. It is a vision of, as it were, a shared vision of the good life for countries poor and rich. I think the important point right now is that the global system has largely failed the poorer countries, relatively speaking, as the recent report that I referred to yesterday by the World Bank pointed out. It is that the dream of convergence that has been much more threatened by the developments, say, of the last decade. And so I just want to make the point that while it is India's aspirations that we, as it were, be the voice of the Global South, and there was an event for that, I do hope that the spirit of fraternity that unites both the G20 and the SDGs will also be an important part of the deliberations. So I just want to end by thanking the organizers, the G20 committee, for engaging Niti Aayog with this, wishing all of you very productive deliberations. I won't be able to stay. Acknowledging the, as it were, the breadth of vision of the organizers to have included not only the core G20 countries, but the partner countries like the Netherlands and also, or the special invitees, and also, I know Bangladesh, possibly Spain as well, as part of this dialogue. So with that, thank you for your attention. Thank you, sir. To reinforce the statement, India grows when its state grows, and the Madhya Pradesh state is continuously striving for it. Now we would like to invite Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan for the inaugural address. Distinguished guests, please note that the Honorable Chief Minister's address is in Hindi. The delegates are requested to use the translator device if needed to translate Hindi to English on Channel 1. आदरणीय सुमन बेरी जी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग भारत सरकार, डॉक्टर स्लामेड सोडर सोनो जी, हमारे रक्षा मामलों के उपमंत्री इंडोनेशिया श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी, श्री तेस्तुसी सोनबे जी, सुजान चिनाय जी, राजीव कुमार जी, डेनिस नोवर जी, सुश्री श्यामला गोपीनाथ जी, एम सुरेश बाबू जी, जॉर्ज लोरथे जी, सचिन जी, जिन्होंने T20 की इस बैठक को यहाँ आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उपस्थित सभी मित्रों, सबसे पहले मैं भारत के हृदय प्रदेश, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश में
मतलब देश के दिल में दिल से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से सारा मध्य प्रदेश प्रसन्न है। आज आप यहां पधारे हैं। अभी जब तेजतुसी जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा नहीं, भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप राजा नहीं, आप भगवान जैसे हैं हमारे लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और मैं सचिन जी से आग्रह करना चाहूँगा कि कोई कमी हमारे अतिथियों के स्वागत में रहना नहीं चाहिए। आप कर भी रहे हैं। मित्रों, हम सब G-20, और मुझे सचमुच में आज लग रहा है जैसे भोपाल इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गई हो। इतने लोग पधारे हैं। आप जो चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा जो पूरे देश की जनता के लिए जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर, अद्भुत नेता है। G-20 की थीम जो इस बार है वो थीम जिसका बार बार उल्लेख हुआ है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वास्तव में ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। देखो, दुनिया में हमने एक नहीं 2 विश्व युद्ध देखे, आज भी शांति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद भी युद्धों का अंत नहीं है। शांति होगी कैसे? भारत का एक श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो आज का नहीं है, हजारों साल पहले का भारत का विचार है। भारत ने कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो सारी दुनिया को ही एक परिवार मानते हैं। सारी दुनिया एक परिवार है। ये विचार दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। और शायद प्रधानमंत्री जी ने इसलिए वन अर्थ वन फैमिली ये कॉन्सेप्ट दिया है। अभी जब आपने एकात्म धाम का यह प्रेजेंटेशन अभी देखा, देखिए दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, भेदभाव, अब ये धरती तो वास्तव में सबके लिए बनाई। कोई भगवान को माने ना माने, आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन धरती तो सबके लिए है। इस धरती पर अलग अलग चैम्बर तो हमने बना लिए। ये मेरा देश है, ये मेरे संसाधन है, ये मेरी दुनिया है, लेकिन यह सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। और ज़्यादा गहराई में जाकर आप सोचें तो भारत ने ये बात हजारों साल पहले कही कि हम सब अलग नहीं हैं, एक ही चेतना के अंग हैं हम। हमारे यहाँ कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। कई लोग ये कहते हैं कि सब में उसी परमात्मा का अंश है। भेदभाव नहीं, एक ही चेतना मनुष्य मात्र में। और केवल मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं रही, ये चेतना और आगे बढ़ी तो भारत ने तो ये भी कहा कि प्राणियों में वही चेतना है। और इसलिए हम प्राणियों की भी पूजा करते हैं। कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन गाय माता है, गाय की पूजा करो। देवताओं के जो अवतार हुए उनमें से प्राणियों के रूप में भी हुए। वो यही भाव है कि एक चेतना, वही चेतना प्राणियों में भी है और वही चेतना हमने मानी पेड़ पौधों में भी। इसलिए भारत है जहाँ पेड़ों की भी पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा करते हैं हम। हिमालय हमारे लिए देवतात्मा है। यहाँ एक पर्व होता है गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने कई वर्षों पहले कहा कि और किसी भगवान को काय को पूछते हो, ये पर्वत है, ये जहाँ में पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, पशुओं को चारा मिलता है, तो प्रकृति की पूजा करो।
नदियों में, समुद्रों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, सूरज में, चंद्रमा में एक ही चेतना। और ये विचार अगर व्यवहारिक रूप से, और इसलिए देखो भारत ने ये कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो। भारत में बच्चे ये कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। जब कोई धार्मिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सारी दुनिया का कल्याण हो। ये बच्चा गाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। यानी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सचमुच में ये अद्वैत का भाव सारी दुनिया से मतभेदों को मिटा सकता है और दुनिया को शांति की तरफ ले जा सकता है। मैं सारे थिंकर्स यहाँ आए हैं। मैं विचारक नहीं हूँ, मैं किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं G-20 के सभी थिंक टैंक्स जो है बैठे, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जरा इस दिशा में सोचें। आज हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। हम में सब शामिल है, कुछ देश ज्यादा कर रहे हैं। जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों का, दुनिया का अंधाधुंध दोहन किया है। भौतिक प्रगति की चाह में आगे निकल गए, कई पीछे रह गए। हम ये सोचें कि प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आप आम का पेड़ ही काट दो तो इसको कहते हैं शोषण। हमने भौतिक प्रगति की चाह में प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया, और जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संकट का हम सामना कर रहे हैं। और आज कह रहे हैं कि हम कैसे पर्यावरण को बचाएं। सचमुच में ये की है, और वो सबको, सारे देशों को सोचना पड़ेगा, दुनिया को सोचना पड़ेगा कि हम इस दिशा में कैसे जाएं। और छोटे छोटे कामों के द्वारा मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अद्भुत है। आप जानते हैं उन्होंने दुनिया को लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया, लाइफ। और लाइफ का अगर मतलब आप लाइफ और पंचामृत में भी उन्होंने कहा भारत 2030 तक अपनी गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा उन्होंने कहा 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को हम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पूरा करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ये भारत कह रहा है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। चौथा उन्होंने कहा 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से ज़्यादा कम करेगा। और पांचवा 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। उनका लाइफ का आइडिया, ये पंचामृत सचमुच में दुनिया को बचाने का मंत्र है और आज बेहद प्रासंगिक मैं इसको मानता हूं। अब ये सदी हमको धरती को समर्पित करना चाहिए। एक ग्रीन जीडीपी के बारे में आप लोग विचार करें। ग्रीन जीडीपी मतलब प्रगति की बात प्रकृति के साथ, प्रकृति से उतना निकालो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले। इसलिए प्रगति प्रकृति के साथ। ग्रीन फाइनेंसिंग, पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का हम कैसे प्रभावी उपयोग करें और उसके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था में सभी देशों की भागीदारी हो। ग्रीन एनर्जी के बारे में ट्रैक 3 में आप इस पर मंथन करने जा रहे हैं, इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। अब प्रधानमंत्री के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश छोटी छोटी चीजों से कैसे पर्यावरण को बचाने में, धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहा है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। आज आप, मैं आभारी हूँ, सचिन जी आपने आमंत्रित किया और आप सब मेरे साथ पेड़ लगाने आए। पर्यावरण अगर बचाना है तो यह भाषण से नहीं होगा, स्पीच से नहीं होगा, इसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं रोज अपने दिन की शुरुआत
पेड़ लगा के करूंगा, प्लांटेशन से करूंगा। और लगातार मैं पेड़ लगाता हूं, और मैं अकेला नहीं लगाता, मेरे साथ अलग अलग संस्थाएं पेड़ लगाती है। फिर मध्य प्रदेश को हमने आह्वान किया कि भाई रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर एक पेड़ लगाओ। मैरिज एनिवर्सरी पर, जो शादी की वर्षगांठ है, उस दिन एक पेड़ लगा दो। इससे बढ़िया मैरिज एनिवर्सरी और क्या हो सकती है। बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगा दो, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो। हमने एक अंकुर पोर्टल बनाया और कहा कि पेड़ लगाओ और उस पोर्टल पर अपलोड करो। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 साल से भी कम हुआ है अंकुर पोर्टल लॉन्च किए हुए। लगभग 8 महीने में 37 लाख लोगों ने अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए और पोर्टल पर फोटो अपलोड किए। और केवल लगाने के अपलोड नहीं किए, 30 दिन बाद फिर फोटो अपलोड किया कि हमारा पेड़ ऐसा है, और 70 दिन बाद फिर अपलोड किया कि अब हमारा पेड़ ऐसा है। तो धीरे धीरे प्लांटेशन का एक वातावरण बन गया मध्य प्रदेश की धरती पर। हम केवल बात ना करें, हम अपने जीवन में उसको उतार के कुछ ना कुछ काम करके दिखाएं। 5 चीजें में, एक पेड़ लगाना, दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाने की बात उन्होंने कही। मध्य प्रदेश में हमने चलाया जलाभिषेक अभियान, और उसमें हमने तय किया गांव का पानी गांव में रोकेंगे, खेत का पानी खेत में रोकेंगे। जनता के सहयोग से, केवल सरकार ने नहीं, जनता ने वाटर बॉडीज बनाना शुरू की सरकार के साथ मिलके, और हमने लगभग 4.5 लाख वाटर बॉडीज बना के कंप्लीट कर दी। छोटी बड़ी वाटर बॉडीज वाटर रिचार्जिंग का काम करने का काम कर रही है। और हर साल गर्मियों में हमारा जलाभिषेक अभियान चलता है, जहां जनता के साथ मिलके हम पानी बचाते हैं। मध्य प्रदेश में अब कैनाल इरिगेशन पे हम नहीं जा रहे, ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रेशराइज पाइप की प्रणाली को अपना के हम पानी कैसे बचाएं। नहीं तो वाटर लेवल की जगह इतना नीचे चला जाता है कि वो एक अलग समस्या बन जाती है। तीसरी चीज, बिजली बचाएं। हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और इसलिए बिजली बनाना बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। ये हमने फैसला किया। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5500 मेगावाट सोलर की एनर्जी हमने उत्पादित की है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो अपने बांधों में भी पानी पर सोलर पैनल बिछा के सोलर पावर प्लांट लगा रहा है और बिजली का उत्पादन करने का काम कर रहा है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन तब तक बिजली बचाएं। मैं खुद अगर अपने कमरे से बाहर निकलता हूं तो स्विच ऑफ खुद करता हूं। मैं वेट नहीं करता कि मेरे जाने के बाद कोई स्विच ऑफ करे। हमने ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते क्या? और पूरे मध्य प्रदेश को मैंने आह्वान किया है कि फालतू बिजली नहीं जलेगी, बिजली बचाने का काम करो। एक और महत्वपूर्ण अभियान, वो इससे थोड़ा अलग है, लेकिन वो है बेटी बचाओ अभियान। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। बेटे ज़्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, इसलिए कि जो लोग मानते थे कि बेटा ज़्यादा उपयोगी बेटा आए। हमने एक योजना बनाई मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना, और हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो जन्म के साथ ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा हो जाएंगे। और उसको हमने पढ़ाई से जोड़ दिया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4000, 11वीं और 12वीं में 6,000, कॉलेज में एडमिशन लगी तो 12,500, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500, और जब शादी करके ससुराल जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। हमने एक योजना बनाई, मैं उसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में 2011-12 में सेक्स रेशियो था 1000 बेटों पे 912 बेटियां, और आज वो सेक्स रेशियो बढ़ के हो गया है 1000 बेटों पे 956 बेटियां। इसको हम बराबरी पर लाकर ही चैन की सांस लें। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स सारी सोच और मानसिकता को बदल देते हैं। और एक हर काम करो तो जन भागीदारी के साथ करो। जनता को स्वच्छता की बात हो रही है। इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है 6वीं बार, जो हमारी कॉमर्शियल कैपिटल है। भोपाल देश की राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन ये भी हमने बनाई
तो जनता के साथ मिलके हम गांव का गौरव दिवस मनाते हैं, शहर का गौरव दिवस मनाते हैं। और उस दिन उस गांव और शहर के लोग जहां भी रहते हैं अपने गांव में आके, चाहे स्वच्छता हो, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, आंगनबाड़ी अडॉप्ट करो, ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो पब्लिक देखिए, जनता को साथ लिए बिना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमने ऐसे कई इनिशिएटिव्स मध्य प्रदेश में लिए हैं। मैं स्वयं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं और इसलिए अंत में मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो G20 के सूत्र वाक्य के रूप में वन अर्थ, मतलब ये पृथ्वी एक है हम सब के लिए, ये पृथ्वी हम सब के लिए, भावी पीढ़ी के लिए इसका साझेदारी के साथ संरक्षण करना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। वन अर्थ, वन फैमिली, मैंने पहले ही बताया, पूरा विश्व एक परिवार है और इसमें केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्राणियों की भी तो चिंता करो। कई प्रजातियां खत्म होने की कगार पे हैं। अब हमारे यहाँ चीते बहुत थे हिंदुस्तान में, एक जमाने में चीते समाप्त हो गए। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी नामीबिया से फिर चीते लेके आ गए। तो मध्य प्रदेश आज टाइगर स्टेट भी है हिंदुस्तान का, लेपर्ड स्टेट भी है, क्रोकोडाइल स्टेट भी है, अब चीता स्टेट भी हो गया है, बल्चर स्टेट भी है हम, क्योंकि गिद्ध को बचाने का भी हमने काम किया है। तो ये धरती इनके लिए भी है, तो इनकी भी हम चिंता करें। तो सब प्राणी और पेड़ पौधों की इनकी चिंता करेंगे तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लायक बचेगी। नहीं तो एक दिन मानव जाति का अस्तित्व ही इस धरती से समाप्त हो जाएगा। तो हमारी चिंताएं, हमारे लक्ष्य सबके एक होना चाहिए। एक दूसरे पर निर्भरता और एक दूसरे पर विश्वास, यही हमारी असली ताकत है, यही हमारी दुनिया की असली ताकत है। और वन फ्यूचर, एक भविष्य, एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी दौड़ ना लगाएं। देखो, मन में कई बार पीड़ा होती है, वेदना होती है। दुनिया के संसाधनों का 80% से ज़्यादा उपयोग मुट्ठी भर लोग और मुट्ठी भर राष्ट्र करते हैं। क्यों इस दुनिया में कोई भूखा रहना चाहिए? क्यों सबके पास मकान नहीं होना चाहिए? क्यों सबके पास मिनिमम सुविधाएं नहीं होना चाहिए? ये कैसी धरती है? कई बार सोच के बेहद तकलीफ होती है मन में। और इसलिए है तो सबके लिए, तो सबके लिए कम से कम जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी हो। और इसलिए संघर्ष नहीं, समन्वय, युद्ध नहीं, शांति, प्रेम, विश्वास। जो पीछे और नीचे ले रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जंगल का कानून है, ये मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता। अरे जिसकी जितनी जरूरत है, और अगर कोई कमजोर है तो उतना उसको प्राप्त करने में मदद करो, कमजोर को भी आगे लाने की कोशिश करो। और इसलिए कई बार जब G20 की बात आती है तो मेरा दिल कहता है, केवल G20 क्यों, दुनिया, सारी दुनिया क्यों नहीं, सारी दुनिया के देश इसमें क्यों नहीं? G7, G20, ये भी अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हैं हमने। G7, G20 नहीं, सारी दुनिया एक हो जाए और कोई एक फोरम बने जहां दुनिया के सारे देश साथ आ जाए और साझा विचार करें कि कैसे सबका कल्याण हो। ये T20 की बैठक इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ, केवल मीटिंग में मत रहना, आप थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी, मध्य प्रदेश देखना भी। या ट्राइबल म्यूजियम बहुत अच्छा है हमारा, तो ट्राइबल म्यूजियम देखने आइए। वर्ल्ड हेरिटेज में सांची बिल्कुल पास में है, सांची देखने जाइए। और मैं तो ये कहूँगा, समय मिले तो भीमबेटका की गुफाएं देखना चाहिए। 3500 साल पुरानी गुफाओं में चित्र उकेरे हुए, पेंटिंग्स बनी हुई है अलग अलग उस समय की मानव सभ्यता, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और वैसे तो समय हो तो महाकाल महालोक भी आप देख सकते हैं। उज्जैन जाके एकात्म धाम जहाँ ओमकारेश्वर में बना रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, 11 टाइगर पार्क यहाँ पे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि अगर समय हो तो हमारी वाइल्ड लाइफ को भी देखिए। और टाइगर भी रिजर्व हमारे ऐसे हैं कि भोपाल में भी कई बार टाइगर गरजते हैं और कई बार उनसे हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। तो मैं तो आपको निमंत्रण दूंगा कि मध्य प्रदेश की विशेषताएं भी देख के जाइए। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चिंतन से जरूर ऐसा अमृत निकलेगा जो विश्व का कल्याण करेगा। एक बार फिर आपका स्वागत, प्रणाम, नमस्कार।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, एक भविष्य और एक फ्यूचर पर प्रकाश डालने के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के सही मायने बताने के लिए। बिफोर फॉर्मली एंडिंग दिस इनॉग्रल सेशन, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर इंद्रानी वरपुजारी, प्रिंसिपल एडवाइजर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, भोपाल, फॉर वोट ऑफ थैंक्स। It is indeed my proud privilege to propose the vote of thanks today at the first G20 event in Madhya Pradesh, the heart of India. On behalf of all, I would like to express our deepest and most heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chouhan ji, not only for gracing this event with his august presence, but also for his leadership to the state level contributions towards G20. We are indeed very obliged to you, sir, for not only for sharing with us today the strides made by Madhya Pradesh towards a sustainable, inclusive, clean, green future for all, which accommodates all. And as you all know, we are indeed very, very obliged to you for spearheading a green movement in the state, and also for taking on so much initiatives for gender equality in the state. As a woman personally, I feel very, very thankful for all the initiatives for gender equality in the state. I would next like to extend a heartfelt thanks to Shri Suman Berry, Honorable Vice Chairman, Niti Aayog, Government of India, for his kind presence today, and also for articulating the importance of subnational growth strategies, and also for stressing on the vision of G20 as shared vision for all, for a good life for all, irrespective of whether rich or poor. We are also indeed very grateful to Ambassador Harshvardhan Shringla, G20 Chief Coordinator, Government of India, for his stewardship of the whole process, and for taking the lead in shaping India's presidency, G20 presidency, as mainstreaming the voices of the global south. I would like to record our sincere appreciation to His Excellency Dr. Slamet Suardasano, Deputy Minister of Political Affairs, Law and Security and Defense from Indonesia, for his gracious presence and for highlighting the role of Indonesia and its commitment to strengthening multilateralism and South-South cooperation to meet global challenges. We are also very thankful to Mr. George Larrier-Adjei, Regional Director for South Asia, UNICEF, Nepal, for his special remarks, particularly highlighting the importance of building the cognitive capabilities of all people, particularly children, if we are to secure our common future. We are also indeed obliged to Mr. Tetsushi Sonabe, Dean and CEO, ADBI Tokyo, for delivering the keynote address and for stressing on the importance of bridging the G20 and the G7 process. Thank you so much, sir. A very special thank you to Ambassador Sujan R. Chinoy for T20 Chair and Director General Manohar Parrikar Institute of Defense Studies and Analysis for stressing on the role of the T20 as an academic space and for its also very human-centric approach. I would also like to record our thanks to DG RIS and Honorable Vice Chairman AIGGPA Professor Sachin Chaturvedi for in fact putting MP in the thick of things as far as the G20 process is concerned, and for his vision in shaping the SDGs. We are also very grateful to Shri S.S. Shukla, PS Tourism,
and Mr. Pratik Hajela, PS Social Justice and CEO AIGGPA for their welcome remarks. Here, I would also like to take this opportunity on behalf of all of us to thank the delegates who have assembled here from different parts of the world, and also for members of the T20, the Urban 20, the Local 20, and all our distinguished guests. We are very, very hopeful that with your kind cooperation and participation, we would have a very fruitful 2 days ahead. Last but not the least, I would also like to thank all our colleagues from RIS, AIGGPA, Rajya Niti Ayog, MP, who have been relentlessly working behind the scenes to make this event a grand success. Thank you all. Thank you, ma'am. With this, we conclude the inaugural session. Dear delegates, please join us at the lawn for a short tea break. I request you to reassemble in 15 minutes for the plenary session 1, Life, Values and Development Transformations, which will be held here. Thank you.